बच्चों, आप सब कैसे हो? How are you, my dears? I hope you all are safe, fine, and naughty at home. Am I right? Yes, I know you're all so naughty at home. Children, बच्चों, आज हम एक नई पाठ सीखेंगे. Children, today we are going to learn a new lesson. Do you know what is that? Can you guess? Can you recollect? How many matras have we seen? My dears? We have seen till now 3 matras or 4 matras. Shall we count? We have seen A ki matra, A ki matra, I ki matra, and E ki matra. So how many is over? Yes, 4 matras over. What is the next swar? My dears? But let me give you a clue. The class must be interesting, right? So, before that, we will see a beautiful, colorful, wonderful, and a sweet poem. Can we hear that one? Okay. Why am I going to sing that poem? Yes, from that poem, I'm giving you a clue. So you can find which matra poem is that. Which matra is that poem belong to? Shall we listen? Yes. Sun sun didi bulbul aayi. Sun sun didi bulbul aayi. बुलबुल कुहुक कुहुक कर गाई. बुलबुल कुहुक कुहुक कर गाई. सुन सुन दीदी बुलबुल आई. बुलबुल कुहुक कुहुक कर गाई. छतर कुसुम गुजरात से आई. छतर कुसुम गुजरात से आई. जामुन टुमक टुमक कर खाई. जामुन टुमक टुमक कर खाई. चतुर कुसुम गुजरात से आई. जामुन टुमक टुमक कर खाई. कुसुम की बुआ गुड़िया लाई. कुसुम की बुआ गुड़िया लाई. लाल चुनरिया उसे पहनाई. लाल चुनरिया उसे पहनाई. बुआ साथ कुमकुम भी लाई. बुआ साथ कुमकुम भी लाई. कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई. कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई. Shall I sing this poem once again? Yes. सुन सुन दीदी बुलबुल आई. बुलबुल कुहक कुहक कर गाई. चतुर कुसुम गुजरात से आई. जामुन टुमक टुमक कर खाई. कुसुम की बुआ गुड़िया लाई. लाल चुनरिया उसे पहनाई. बुआ साथ कुमकुम भी लाई. कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई. So children, from this poem, which matra's word repeated again and again? Which matra's word repeated again and again? Shall I sing once again? So that you can find it easily. Yes. सुन सुन दीदी बुलबुल आई. सुन सुन दीदी
बुलबुल आई, बुलबुल कुहक कुहक कर गाई, बुलबुल कुहक कुहक कर गाई। चतुर कुसुम गुजरात से आई, चतुर कुसुम गुजरात से आई, जामुन टुमक टुमक कर खाई, जामुन ठुमक ठुमक कर खाई। कुसुम की बुआ गुड़िया लाई, कुसुम की बुआ गुड़िया लाई, लाल चुनरिया उसे पहनाई, लाल चुनरिया उसे पहनाई। बुआ सात कुमकुम भी लाई, बुआ सात कुमकुम भी लाई, कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई, कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई। Yes, my dears, it is of U की मात्रा. Yes, what are the words? सुन, सुन, बुलबुल, कुसुम, गुजरात, चतुर, जामुन, टुमक, बुआ, चुनरिया, कुमकुम, मुस्काई. So all these words are U की मात्रा sounded words, right? Very good, excellent. I'll give you stars. Yes. So children, you are wonderful. You have find out that is U की मात्रा. It sounds U की मात्रा. Yes. So children, shall we get into the class? Yes. U की मात्रा. U की मात्रा sound is very short sound. U की मात्रा sound is very short sound. U, U, U. So letters like ku, nu, chu, pu, su. Okay. What is U की मात्रा? Yes. A circle, D curve. A circle, D curve. But shall we recollect all the matras till now? What have we seen? Yes. A no matra. For swar a, no matra. For a, one standing line, one sleeping line. One standing line, one sleeping line. E. Curve moves to left side. Curve moves to left side. E. E. Curve moves to right side. Curve moves to right side. Yes. Next, U. U. Shall we see how to write U की मात्रा? Shall we see how to write U की मात्रा? Are you ready, my dears? Yes. This is U की मात्रा. A circle, D curve. See how the strokes are? Circle, D curve. Circle, D curve. What is this matra? U की मात्रा. What is this matra? U की मात्रा. Circle, D curve. चलो बच्चों, practice this. Yes, practice it. Yes, very good, very good, very good. Circle, D curve. Circle, D curve. So, U की मात्रा. छोटी U की मात्रा is circle, D curve. Okay, now we will see where to put this U की मात्रा to the letter. Where to put the U की मात्रा to the letter? For A की मात्रा, we will put at the side of the letter, right? We will put at the side of the letter. See here, where is the A की मात्रा? At the side of the letters, right?
Then what about choti E ki matra? E ki matra. Ka moves to left side. So the matra is to the left of the letter. To the left of the letter. For E ki matra, the matra is to the right of the letter. Matra we have to put at the right of the letter. What about OK matra? Can we put above the letter? Is it correct? Yes? Shall we ask our friend Bunny? Shall we ask our friend Bunny? Bunny, can you help us? Where to put OK matra? Sure, dear. First, we will ask him whether it is correct or not. Bunny, is this correct? No. No, it is not correct. We cannot put above the letter. It is wrong. Shall we put left of the letter? Shall we put left side of the letter? Is it correct, Bunny? No. Again, no. Is it wrong? Oh my God, children, it is wrong. We cannot put at the side of the letter, at left side of the letter. Okay, shall we put below the letter? Shall we put below the letter? Children, yes, shall we put? It's correct. Hey, superb. It is correct. Thank you, Bunny. Welcome, Now dear. it is correct. So we have to put below the letter. We have to put below the letter. Okay. One more side is pending, right? Shall we put right of the letter? Shall we put right of the letter? Hey, that is also correct. But not for all the letters. But not for all the letters. For all the 32 letters in Vyanjan, we can put below the letter. Below the letter. But for the letter Ra, for the Vyanjan Ra, it should not be below the letter. It should be at the right of the letter. It should be at the right of the letter. Children, keep this in mind. For all the letters, we have to put below the letter. The U ki matra should be below the letter. But for the letter Ra, for the letter Ra alone, it should be at the right of the letter, right side of the letter. We should not put below the letter for the Ra. We should not put the U ki matra below the letter Ra. We have to put only at the right side. So out of 33 letters, U ki matra must be below the letter for all the 32 letters. For these letters, it must be below the letter. But for Ra letter, it must be at the side. Children, keep this in mind. Yes. Children, now shall we see U ki matra for all the letters? Yes, now we are going to pronounce. Pronounce along with me. Yes. Ka with U ki matra, ku. Bha with U ki matra, bhu. Va with U ki matra, vu. Sa with U ki matra, su. La with U ki matra, lu. Sh with U ki matra, shu. Ga with U ki matra, gu. Now we will see for all the letters how to pronounce ku. 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 Gu. 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 Mu. Mu. Chu. 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 Ju. 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 New. New. Children, please follow me. Say along with me. Next. Tu. 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 Do. 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 Nu. Nu.
nu, nu, nu. Pu, pu. Fu, fu. Bu, bu. Bu, bu. Mu, mu. You, you. Ru. Look at this letter Ru. How? Where is the Uki matra? At the right side of the letter. Ru, ru. Lu, lu. Vu, vu. Shu, shu. Shu, shu. Su, su. Hu, hu. So children, do you understand how Uki matra letter sounds? Yes. Now our lesson 5. This is our lesson 5. Uki matra. Uki matra. Uki matra symbol is circle D curve. Circle D curve. Children, today we are going to see only Barakadi. Today we are going to see only Barakadi. Children, see here. Ka below Uki matra. How to pronounce that? Ku. 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 Ka Uki matra. Ka with Uki matra. Ku. Ka with Uki matra. Ku. Ku. Yes, very good. Shall we start? Barakadi. Ka नीचे हलन ik plus u equal to ku. Ka नीचे हलन ik plus u equal to ku. Ka नीचे हलन ik plus u equal to ku. Kha नीचे हलन ik plus u equal to ku. Kha नीचे हलन ik plus u equal to ku. Kha नीचे हलन ik plus u equal to ku. Ga नीचे हलन ig plus u equal to gu. Ga नीचे हलन ig plus u equal to gu. Ga नीचे हलन ig plus u equal to gu. Ga नीचे हलन ig plus u equal to gu. Ga नीचे हलन ig plus u equal to gu. Nga नीचे हलंत ing plus u equal to mu. Nga नीचे हलन ing plus u equal to mu. Nga nga नीचे हलन ing plus u equal to mu. Nga नीचे हलन ing plus u equal to mu. Nga नीचे हलन ing plus u equal to mu. Next, cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Cha नीचे हलन ich plus u equal to chu. Ja नीचे हलन ij plus u equal to ju. Ja नीचे हलन ij plus u equal to ju. Yes, my dears, very good. Say along with me. Ja नीचे हलन ij plus u equal to ju. Next, ja नीचे हलन ij plus
U equal to Ju. J नीचे हलन इज प्लस U equal to Ju. J नीचे हलन इज प्लस U equal to Ju. Very good. Next. Nya नीचे हलन in plus U equal to new. Nya नीचे हलन in plus U equal to new. Nya नीचे हलन in plus U equal to new. Next. Ta नीचे हलन it. Yes, very good. Plus U equal to 2. Ta नीचे हलन it plus U equal to 2. Ta नीचे हलन it plus U equal to 2. Next. Tha नीचे हलन it plus U equal to 2. Tha नीचे हलन it plus U equal to 2. Very good, my dears. Very good. Tha नीचे हलन it plus U equal to 2. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Dha नीचे हलन id plus U equal to do. Dha नीचे हलन id plus U equal to do. Dha नीचे हलन id plus U equal to do. When you put halant below any letter, that letter gives only half sound. We will call it half consonant. Yes? You remember this, my dears? I hope you remember this. Next. Na नीचे हलंत in plus U equal to nu. Na नीचे हलंत in plus U equal to nu. Na नीचे हलन in plus U equal to nu. Next. Ta नीचे हलन it plus U equal to tu. Ta नीचे हलन it plus U equal to tu. Ta नीचे हलन it plus U equal to tu. Next. Tha नीचे हलन it plus U equal to thu. Tha नीचे हलन it plus U equal to thu. Tha नीचे हलन it plus U equal to thu. Next. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Da नीचे हलन id plus U equal to do. Na नीचे हलन in plus U equal to nu. Na नीचे हलन in plus U equal to nu. Very good, my dears. Very good, very good. Na नीचे हलन in plus U equal to nu. Next. Pa नीचे हलन it plus U
equal to poo. Pa नीचे हलंत इप प्लस ऊ इक्वल टू पू. पा नीचे हलंत इप प्लस ऊ इक्वल टू पू. फा नीचे हलंत इफ प्लस ऊ इक्वल टू फू. फा नीचे हलंत इफ प्लस ऊ इक्वल टू फू. फा नीचे हलंत इफ प्लस ऊ इक्वल टू फू. बा नीचे हलंत इफ प्लस ऊ इक्वल टू बू. बा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू बू. बा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू भू. भा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू भू. भा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू भू. भा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू भू. मा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू मू. मा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू मू. मा नीचे हलंत इब प्लस ऊ इक्वल टू मू. या नीचे हलंत ई प्लस ऊ इक्वल टू यू. या नीचे हलंत ई प्लस ऊ इक्वल टू यू. या नीचे हलंत ई प्लस ऊ इक्वल टू यू. या नीचे हलंत ई प्लस ऊ इक्वल टू यू. रा नीचे हलंत इर प्लस ऊ इक्वल टू रू. रा नीचे हलंत इर प्लस ऊ इक्वल टू रू. ला नीचे हलंत इल प्लस ऊ इक्वल टू लू. ला नीचे हलंत इल प्लस ऊ इक्वल टू लू. ला नीचे हलंत इल प्लस ऊ इक्वल टू लू. वा नीचे हलंत यू प्लस ऊ इक्वल टू वू. वा नीचे हलंत यू प्लस ऊ इक्वल टू वू. वा नीचे हलंत यू प्लस ऊ इक्वल टू वू. शा नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. शा नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. शा नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. शो नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. शा नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. शा नीचे हलंत इश प्लस ऊ इक्वल टू शू. सा नीचे हलंत इस प्लस ऊ इक्वल टू सू. सा नीचे हलंत इस प्लस ऊ इक्वल टू सू. सा नीचे हलंत इस प्लस ऊ इक्वल टू सू. नेक्स्ट हा नीचे हलंत यू प्लस ऊ इक्वल टू हू. हा नीचे हलंत य प्लस ऊ इक्वल टू हू. हा नीचे हलंत य प्लस ऊ equal to who. Very good. So children, we have seen Barakadi from Ku to who. From ku to who. Children, I hope you have understood the class very well. Children, it's very easy one. Kindly practice it in home, my dear. Yes. Dhanyavad bachcho. Thank you, my dear children.